So welcome. So we are going to discuss about this pattern as an exam preparation. And in this module, I have prepared some modules. So if you look at the pattern as an act book, this bare act. So you will see that there are sections which has been categorized into various chapters. And these chapters are very systematic. So chapter 1 is regarding the short title, then chapter 2 is something inventions not patentable. Chapter 3 is application for patents. Chapter 4 is publication examination. So they start with what is not patentable first, and then they start how to apply for the patent, and then how the publication and examination happens. Thereafter, they immediately start with the opposition proceedings in chapter 5. Chapter 6 talks about anticipation. That means during the examination, if there is anticipation, that means if you find any prior arts, how to deal with that. And then there is a provision for secrecy, and then chapter 8, grant of patents and the rights. So there is a very nicely covered in these chapters, and there are 23 chapters are there. What I have done is that I have mixed these chapters and prepare modules, and so that it is easy for us to understand and discuss and learn this patent act, rules, forms, fees together at one time. So module 1 is how to file a patent application in India. Module 2 is publication and request for examination. So once you file the patent, then how the publication happens, and then how the request for examination is done. Module 3 is pre-grant process, and then FER handling. So we'll discuss on that also. And then we have this patentability criteria and exclusion. Module 5 will be amendments, post-dating and withdrawal. Module 6, rights, duty, patent ownership, then opposition, revocation, restoration, then PCT filings, and then drafting, practice and legal interpretations, form, fees, and timeline. So forms, fees, and timelines we are going to handle throughout, but then also we'll see as it together. Infringement and enforcement, then assignment, licensing, and compulsory licensing, then grant terms, surrender, anticipation, prior use, ethics, declaration, and practice as a patent agent. Then there are many things we'll cover in the miscellaneous. And then also we try to have one full length mock test, and also we'll have this mock interviews. Okay. So today we are going to start with this module 1, how to file a patent application in India. So see, idea here is that even if you know it, discuss today. Okay, anything that you think that it is difficult for you to understand, let us discuss it. So today's content is, I'm not going to the content, so many things I'm going to cover. And this drafting exercise will not do it today. Okay, so I will do it on the next Sunday. Practice case practice scenario. I'll post similar quizzes for you to practice scenarios, and the next session we'll do we'll do a sample drafting exercise. Okay, I will tell you how to draft, and then we'll also do later on also. So when you start, what is a patent? Anyone know you know what is a patent? Sir, novel process or product which is having some inventive step, and which has got industrial application. Okay. So if I have a patent, do I have a right to manufacture something? If, say, for example, if I have a patent for paracetamol, okay, for example, so do I have right to manufacture paracetamol or what? Yes, sir. If others don't have patent for the same similar invention or part of the invention.
Yes, sir. I think no, sir, Okay. because patent is a legal uh, document, so it stops others from making the selling invention. So if we Hmm. want to use the patent, we need to still look for the any patents for it. We do not infringe other patents. Correct. You are right. So see, patent is like a negative right. It is right to stop others. Okay, it is not. It doesn't grant us right to manufacture. So if I have patent for paracetamol, then it does not grant me to manufacture paracetamol. This you should know very clearly. So if I have a patent on paracetamol, I do not have right to manufacture paracetamol. I have the right to stop others from manufacturing paracetamol. For example, if I say that uh, a composition containing paracetamol, for example, this is the claim: a composition containing paracetamol or composition comprising paracetamol. Then it does not tell that I can manufacture paracetamol. It tells that anyone or in any country where my patent is in force. You should remember this. My patent is in force. That means my patent is live, and I am paying the continuation fees to the respective countries. Some countries the fee is paid annually. In some countries, paid, after 3 years, something like that. So they are different. Okay. So depending on the different jurisdictions, there are different laws. So wherever my patent is live, it has not been withdrawn, it has not been abandoned, and it has not been revoked or you have not abandoned it. So patent is live. So, and it's a granted patent. So patent is granted, and then the patent says a claim says a composition comprising paracetamol. So I can stop anyone from making, selling, using, importing, or offering for sale such composition which comprises paracetamol. But I cannot manufacture it. Okay, because why I cannot manufacture it? So remember this, because many times in the interview this basic question is asked, and the candidate they fail to answer the question. It is very simple. What patent does? Very simple question. They cannot answer it, and that becomes the reason to. The interviewer they are not very happy if you don't answer the rightly. So why does not give me grant to manufacture the paracetamol? Because someone may have a patent on this in some other aspect of it, for example, manufacturing process or what it comprises, something like that. So we do not know what could be. So that is called FTO, freedom to operate or freedom to practice, something like that. So we need to check if I have freedom to operate or freedom to practice. So if I do not have freedom to operate or freedom to practice, then I cannot. Okay. So all clear. So patent, if I have patent, it is like I can stop others from practicing it. If I have patent for product, that is the strongest patent. If I have patent for process, it is slightly weaker patent because it only protects the process, a specific process that is given there. And if there is a process product, so product by process. So we'll discuss more on this when I study about the specification and the claims, but this is important for you to understand. So patent is an exclusive right, and it's a negative right granted for invention. Right? So if we have this bare act, so we'll read simultaneously whatever sections and rules come, so that you also become it becomes easy for you also to read. So can you open section 2M? So 2M, it says patent. Patent means a patent for any invention granted under this act.
Okay. So under this act, the patent is granted, and this patent is for invention. Okay. And there should be novelty. New, novel, that will not disclose anywhere, then involves inventive steps, not obvious to someone skilled in the field, and capable of industrial application. So these are definitions. 2.1J. 2.1J, it says invention means a new product, okay, or process. New product or process involving an inventive step and capable of industrial application. Again, in 2JA, it defines what is inventive step. Okay. So what are inventive steps? Inventive steps, it involves technical advances compared to existing knowledge. So you need to show, or while drafting the application, how it is written, that you need to write that these are the some drawbacks, and there are some references available, but none of them are able to, say for example, everyone is suffering from fever, and we are living in a world where there is no medicine for fever, only painkiller, something like that. And then we wanted to say that my composition, it cures the fever. So something like that. Then then again, say for example, fever. So some medicines are there which can only cure fever up to, say, temperature of 100 Fahrenheit or 100, but not more than that. 100, 200, 300 for very high fever, they cannot cure it. So fever medicine is known, but it is only known for a limited application, but we want to advance it compared to existing knowledge. Or inventory is also counted when there is a economic significance. So economic significance means that the product is cheaper, or the process is very cheap, and by using that process or that product, I mean, you have very huge economic advantage. Okay, so those are the thing that is counted. So two things, inventory step, two things. It should give technical advances compared to existing knowledge, or economic significance, or both. Both should be there. So there could be some question around that. Say for example, it says that my invention, it gives economic significance. For example, it says that it increases the profit by 30%. It increases the profit by 0.1%. So economic significance, there's a word significance, but nothing percentage has been discussed. So if you want to say that what is significance means, so it is a legal language. So if there is some case laws, so case laws will help us understand what is the meaning of significance. Okay. So does significance mean 0.1% profit increase, or 10% profit increase, or 50% profit increase? What should be considered as economic significance? So I'm telling you these numbers so that it is easy for you to understand that this word. So inventory step is 2JA. So invention is 2J, and 2J is inventive step. Okay. And then there is a 2.1L, new invention. So new invention means any invention or technology which has not been anticipated by publication in any document. First is publication in any document. So it could be patent document, it could be WhatsApp, it could be Facebook, Twitter, newspaper, books, articles, any place it's not published or used in the country or elsewhere in the world before the date of filing of the patent application. So when we file an application and then it goes to the examiner in the patent office, the examiner, they look for prior arts, and this is what they look for. They look for publications and any mention of the use of the technology or of invention, and that is called anticipation.
Okay. So in the country means in India or also elsewhere in the world before the date of filing of patent application with complete specification. That is, subject matter has not fallen in public domain or that does not form part of the state of the art. So that is called state of the art. So patent office, they do the searches and then they find it. And then there is called capable of industrial application. So that is AC, 21 AC. So capable of industrial application means that means the invention is capable of being made or used in an industry. So capable industry application is meaning that being made in the industry or has a capacity to be used in industry. So it could be like it should not be a product only. So made in industry means it is a product out of the industry, comes out in the market and is being sold. But there could be something like instrument or some improvement in the process. So that is being not sold, but it helps in manufacturing of some goods. So that is used in an industry. So these are three criteria: invention, inventive steps, there's a new invention, capable of industrial application, and then we also discuss about the patent is a negative right. And section 2M, it says that patent granted for any invention granted under this act. So this is the patent 2M. So be clear about this patent is a negative right. Okay. Then inventive steps also include economic significance, and it involves advance compared to existing knowledge. So what happens that in today's world, many things that many patents that are filed, they are mostly involves inventive step because many things are known. For example, foam is known, right? Foam is known, but maybe some fire retardant of foam is not known. Okay. Again, fire retardant foam is known, but at a specific temperature and some condition is not known. Okay. If certain specific condition is known, then the manufacturing process is difficult for some. Okay. So these are, I mean, if we say novel, means nothing is so world does not know that a foam could be fire retardant. A foam could be fire. So, for example, the T-shirt that we wear. So, if there is a fire, the T-shirt. So, T-shirt is not going to protect me from the fire because it does not have fire retardant property. So, for example, tomorrow, if we start selling a T-shirt which is fire retardant, but cost is high because it's fire retardant, and then there is some uncomfortability in wearing it. So no one is going to buy the T-shirt, and also the price is high because I'm not supposed to wear the T-shirt where there is a fire hazard. So then who is going to buy this kind of thing? But then also somebody can file a patent saying that the T-shirt with the fire retardant property. So it can be used by the person who is cooking the food in the kitchen, so he will not get caught in the fire, something like that. So something is known, but just a small improvement. Or if you can say that because of using this process, for example, we say that we are trying to avoid the solvent. So in my process, solvent is not used, whereas in the previous process, 20 liters solvent were used in each batch. But in my process, this solvent is not used. This solvent is also, it is harmful for the environment, but because my process is solventless, therefore it is good for environment, and also the cost is less because I avoid 20 liters solvent cost. So I can show that it is economic significance is there because it increases my profit by certain percentages. So inventive step includes technical advantage, also the economic significance. So you can expect some question around those. So be mindful of it so that, and it could be both, or it could be both, or it could be one of them.
Okay. Then who can file a patent? So patent can be filed by true and the first inventor. So if we have this bare act, read to Y. So we read together so that you understand how to read and how to understand this. True and first inventor. So you see, in the bare act, it does not say who is true and first inventor. It says who is not the true and first inventor. Okay, the question is we're asking is who is true and first inventor, but the bare act says who is not true and first inventor. So many places you will see that the patent document says what is not, and then what it is we need to interpret, and if there is some case law, some court cases are there, from there we get more clarity of what it is. But what it is not, it is mentioned very clearly. So true and first inventor does not include either the first importer of the invention into India. So if somebody just imports the technology, for example, you're talking about the paracetamol. So paracetamol was manufactured in some country, so say for example, Europe or China or America. And from there, I imported it. And then I want to file the patent because I imported it. So I am not the true and first inventor. Or a person to whom the invention is first communicated from outside India. So I'm the person to whom the process was told to me, and then I started manufacturing. So I am not the true and first inventor. So basically, an inventor, true and first inventor is not the person who imports or who receives knowledge from outside India. So other than that, from our basic understanding, we understand that true and first inventor is the one who really worked on it, whose idea was it. And it is not that I worked on it, so I'm the inventor. The person who conceives the idea, he is the inventor. And then he may employ someone to work on behalf of him, do it, because many things we cannot do it. But the one who thinks about it, he is generally called true and first inventor. Then he can employ someone who can pay the money, someone to work on the process. For example, if I, being a chemist, I come to know how to make paracetamol and then what ingredients are required and then everything. Then I would hire some research scientists to work in my company and then ask them to follow the process and then give me the output. And then they follow the process, they give me the output, and then I know the process, I know the compound, I file the patent. So I am the true and first inventor, not the research scientist who just worked on it and did nothing thinking about it. So they are not the true and first inventor. So you may come across this kind of question. For example, that you are working under a scientist or R&D scientist, R&D head, and then he tells you the process of making this, and then you do the work in the research lab. You are a chemist hired under a scientist. You are getting paid salary, and you just do what is said, but actually you are working it. Then who is a true and first inventor? So you are not true and first inventor. True and first inventor is the person who conceived the idea, who knows the idea, who knows the thing, and we are just working for him. So we are not the true and first inventor. Okay. So 2Y, and then true and first inventor can file, and then assignee can file. So you can read 2AB. So who are called assignees? The assignees could be assignee of the assignee. So I assign to someone, then he assigned to someone, and this loop can go endlessly. So it doesn't end any places, that how many assignee could be there. So if sometime it asks, I mean in interview or in an exam, that you are the 500 assignee. I mean, before you, 499 people have already worked on this. Now you are the assignee. So can you file a patent now? Yes, I can file a patent because it says includes an assignee of the assignee and the legal representative of disease assignee. I mean, someone who is passed away, and then legal representative can also, and reference to assignee of any person, include reference to assignee of the legal representative. So in simple term is like if the right is assigned to anyone, so they are the assignee. So here it means that sometime it happens that research happens in one company, then a company assigns to another company. Okay, so
these things may continue, universities to company, company to individual to company. So in most of the company, what happens that all the research scientists who work in a company, so actually they are the true and the first inventor, but what they do, they assign their invention to the company. So the company becomes the applicant, and this is assigned, and this assignment is valid. It's not like I say that I assign to you. Assignment is only valid when there is a written document. Okay, there has to be a legal notarized document where we say I am the true and first inventor, and then I worked on this, and then we the group assignee, we assign this to this company. So that document has to be produced to say that we are the assignees. Then legal representatives, that is to 2K. 2K. So legal representative means a person who is in law, represents the estate of a deceased person. 2K, remember this. So a patent agent or legal heir cannot be applicant unless it is assigned. So that assignment is important. And then section 134. Okay, so open section 134 and read. So what it says that there is something called reciprocity. Okay, so there are convention countries. So it is under international arrangement, chapter 22. So it is under the convention countries. But if a country does not recognize Indians or Indian citizens to same right what they grant to their own citizens, so they are not reciprocating. So they are so that we should know that such person cannot apply patent in India. They will not be given. So apart from then, others can do it. Okay. Types applicant, you know, right? So it could natural person. Rule 2F. Just open rule 2F and see what it is there. So we'll go as the rules comes, and we'll go. So what is okay, next. Okay. So natural persons for the fee and startups. So form 20 is required, and 2FB. 2FB is the for the startups. And then small entity, MSMEs, form 28. Then we also know need to have Udyam acknowledgement. 2FA. 2FA means startups. So an entity in India recognize a startup by the competent authority under a Startup India initiative. And in case of foreign entity, an entity fulfilling the criteria for the turnover and the period of incorporation. So all it is decided by the Startup India initiative. So that they will decide that you are a startup or not. Okay. And 2FB. 2FB and 2FA. FA is a small entity. So there are certain conditions, and MSME will decide that you are a small entity or not. Okay, so I will show you how it is. And then the other than natural person, companies, research institute, universities. Rule 2CA. CA. Educational institutes comes under CA. They can also file the application. And why it is important? Because the fee differs based on who are you. So when you see the applications, form 1, form 2, there we need to mention that what is the nature of the applicant. Is it a natural person, a startup, MSME, or others? So the criteria is that company A should be less than 10 years of incorporation, and company type should be private limited or registered partnership form or LLP. This is called limited liability partnership. And annual turnover should not exceed 100 crore in any other financial year since inception. That means within 10 years. And then original entity, they should not be formed by splitting the companies. And then it says they should work toward development or improvement of product, process, or services. And it should be a scalable business and has potential
for the creation of wealth and employment. So these are the conditions. You can go to this DPIIT sites. You can see it says that DPIIT recognition. So under the Startup India initiative, eligible companies can get recognized as startups by DPIIT in order to access the tax benefit and the IPR fast tracking and many things. So you can just open this website, startupindia.gov.in, and you can read more about it. So, I mean, the more you explore yourself, different websites and different ideas, more confident you will become to answer the question, and also you are more confident in doing the interviews. And similar, this is the MSME website. So there, this Udyam registration is done. So you don't need to know the entire process, how this registration is done. Just have a look at it, how it is, and have some idea about it. So that is good. So you can see micro, small, and medium. So this is a chart, okay, taken from the MSME website. So there is some change in condition. You can see two things. One is the investment, and other is the turnover, right? It is all in crores. So micro is from 1 crore, now it has changed to 2.5 crores investment. A small, earlier it was up to 10 crore, now it is 25 crore for investment. And medium, it was 50 crore, and now it is 125 crore investment. So we are talking about a small entity. The small entity, we should know investment should be less than 25 crores, and the turnover is different, right? So you should not get confused regarding investment and the turnover. So turnover here is for small entities 100 crores, not exceed 100 crores. For micro, it is 10 crores, and for the medium, it is 500 crores. For the small, it is 100 crore. So that should not exceed. So investment and turnover, these two are different things. Anyone has a doubt regarding the investment turnover? Right, I think everyone is clear. You know this. Investment is something, right, which I invest into it. Okay, and then turnover. So there is one thing that you should know, that while calculating the investment, so it is given in Rule 2FA. Rule 2FA, it is given that while calculating the investment in the plant and machinery, cost of pollution control, R&D, industrial safety device, and such other things maybe especially notification under the micro, small, and medium enterprise development shall be excluded. Okay, so I'll calculate in the how much investment is done. Okay, so these things are excluded because this may amount to more in some cases. So cost of pollution control, R&D also, right? You see, R&D also is excluded, and industrial safety devices, and some other things which may mention in the MSME website. So in the BEAR Act, it is not given entire list. So to any reference to this, we need to go to MSME website and then understand what it is mentioned. So you can remember cost of pollution and R&D and industrial safety, and their safety devices. Some things are not counted under investment calculation. So they are excluded. Okay. And reference rates of foreign currency or the Reserve Bank of India shall prevail. And so while calculating, if there is a foreign currency rates are involved, then that also is calculated, or it is also considered while calculating the investment. And then the turnover is the profit, what you get total turnover, and how much you are selling. So these are turnovers. Okay, so these are the MSMEs. Okay, now the most important thing is that where to file the patent. Okay, so there are 4 branches: Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata is the head office, and the jurisdiction is based on address of the applicant or assignee, or the place of origin of the invention, and then that is used in the filing of Form 1. And then, so what is important is first applicant address. So, for example, there are 3 or 7 or 4 persons are there. They are working in, say, for example, Bangalore. Okay, one person, his residential home is in Delhi,
other person residential is in Mumbai, one person from Chennai, and one person from Kolkata. But your R&D center is in Bangalore. So you tell me whom we will consider as a first name in the application. So for example, your .NET application, person A, person B, person C, person D. So who will consider to be first person in the application? Anyone can guess? So I think Bangalore, the person from Bangalore, Why? because the origin is from Bangalore, so that's why he will be the first one. What happens if I first person I put Delhi, then what happens? Then maybe it's Delhi. Yeah, what happens if I put the first person address who is from Delhi? Then what will happen? Head office change because the application भी दिल्ली में डालना पड़ेगा. हाँ, तो अभी जो मेरा R&D सेंटर है वो बेंगलोर में है, लेकिन अगर मैंने पहला पर्सन जिसका एड्रेस दिल्ली का है तो मुझे फिर पेटेंट दिल्ली में फाइल करना पड़ेगा. समझे आपने? हाँ, तो फिर प्रॉब्लम क्या होगी मुझे, अगर मुझे पेटेंट ऑफिस जाना पड़ा किसी काम की वजह से, हियरिंग के लिए किसी के लिए, तो मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा. इसीलिए अगर अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे बेंगलोर के नज़दीक चेन्नई ऑफिस है, तो मैं चाहता हूँ चेन्नई में ही मेरा ऑफिस सारा फाइलिंग हो और सारा कम्युनिकेशन वहीं से हो. मेरे एप्लीकेशन में हो सकता है दो लोग दिल्ली से, मुंबई से, भाई अगर एक भी बेंगलोर रीजन का है, चेन्नई हेड ऑफिस, चेन्नई ऑफिस के रीजन का है, तो उसका नाम डालूंगा पहला, फर्स्ट नेम, सो दैट आई कैन फाइल माय पेटेंट एप्लीकेशन इन चेन्नई ऑफिस, सो दैट मेरा जाना आना आसान हो जाएगा. क्लियर? तो हिंट. Yes, sir. Okay. And then if somebody is filing application from outside, then the service address, उनका जो भी एड्रेस रहेगा इंडिया में, या अगर उन्होंने कोई लॉ फर्म लिया है, कोई पेटेंट एजेंट लिया है, तो उनका जो एड्रेस रहेगा उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि वो कौन से ऑफिस में पेटेंट फाइल करेंगे, और उसका प्रोसिक्यूशन वहीं से होगा. And this service address change is difficult. So if you read in Rule 4(2), okay, Rule 4(2) says that the appropriate office once decided in respect to any proceeding under the Act shall not ordinarily be changed. तो साधारणतः चेंज नहीं होता. एक बार डिसाइड हो गया कि चेन्नई ऑफिस में होगा, क्योंकि जो फर्स्ट पर्सन था चेन्नई का, बेंगलोर रीजन का था, चेन्नई में कर दिया हमने, तो चेंज नहीं होता. लेकिन 3 Rule 4 का 3 it writes that the controller may transfer an application for patent so file to head office, means Kolkata head office, or as the case may be branch office of the patent office. तो कहीं भी ट्रांसफर कर सकते controller, but that is very difficult. So we should not play with this कि कंट्रोल चेंज कर देगा. we should decide. तो जनरली जहां हमारा R&D रहता है, अगर बेंगलोर में है, मुंबई में है, तो जहां के लोग रहते हैं वहीं हम फाइल करते हैं. देन कंट्रोल में चेंज सभी एड्रेस. एंड डिविजनल, अगर हम डिविजनल एप्लीकेशन फाइल करते हैं, सो दैट इज आल्सो फाइल इन द फर्स्ट फाइल ऑफिस ओनली. तो अगर हमने जो प्राइमरी जो था, पहला वाला एप्लीकेशन था, अगर हमने चेन्नई में फाइल किया है, तो डिविजनल भी चेन्नई में ही फाइल होगा. सो दीज आर थिंग्स टू बी अंडरस्टूड अंडर द ऑफिस एंड जुरिसडिक्शन. Similarly, I mean, Rule 5, you can read that there has to be address. It says that there has to be address in India. अगर कोई फॉरेन से फाइल करता है, एक एड्रेस जरूर होना चाहिए, फोन नंबर होना चाहिए, ओके, सो दैट वो उनके साथ कम्युनिकेट कर सके. तो दिस इज व्हाट इट सेज अबाउट द एड्रेस in Rule 5. So next is when you file a patent application, it could be provisional or complete specification. Now you see thing which differentiate between the provisional and complete. Okay, so looking at the application, how do you know it is provisional or complete? Can anyone tell? You have Form 2 in your hand, right?
And then how do you know by looking at the first page that is provisional So in specification or complete? the first page, the preamble is there. Correct. You are right. So yeah, so for provisional, I think the preamble is like the following invention. Sir, actually, I forgot, sir. I have to see. Yeah. Particularly describes the invention. ये वाला चीज सर होता है complete Correct. specification. Yeah. So the following specification describes the invention. Okay. So Yes, that is sir. called Describes the provisional. invention. और complete में होगा in the manner in which it is to be performed. Correct. So provisional में how it is performed that may not be given, but in complete specification you need to describe the invention and also tell the manner in which it is to be performed. So both should be there. So provisional में sometimes may not be claims तो नहीं होता कई बार, and description रहता है, and then full description में claims and abstract subtitle रहती है complete में. And the provisional purpose क्या रहता है? Secure the early priority date. And the complete is necessary for grant. If you just file provisional and you do not file complete, so वो grant के लिए नहीं जाएगा वो. Okay, so you must file. Can anyone tell which is the section which says that after filing provisional, complete has to be filed? आपको मैंने 9. होमवर्क दिया था. हाँ, Section 9. very good. अर्चना, very good अर्चना. So section 9 कौन सा subsection? Subsection. Not. हाँ, ये पता होना चाहिए ना. सबके पास में है बुक, बेयर एक्ट का बुक है? Anyone Yes, who sir. has not purchased the book? Yes. Very good. कौन सा है अर्चना? सेक्शन 9 का? Subsection 1. Correct. 1 है. Yes. 9 का 1. It clearly says that it's accompanied by provisional specification. A complete specification shall be filed. कब तक फाइल करना है? 1 year में. 1 year नहीं, 12 Within months. 12 months. Within 12 months. अच्छा, 1 year और 12 months में क्या अंतर है? What is difference between when I say 1 year and when I say 12 months? क्या difference हो जाता है? No idea, sir. Guess करो. सर वो February 28, 29 वाला है क्या? नहीं, बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन व्हेन यू काउंट द मंथ ना, है ना, तो डेट के हिसाब से बराबर होना चाहिए. एंड विदिन, इसमें लिखा है विदिन 12 मंथ्स. विदिन 12 मंथ्स मीन्स थोड़ा भी क्रॉस नहीं होना चाहिए. हाँ, 1 year से पहले करना है. हाँ, 12 मंथ है ना. सो बेसिकली यू शुड मेक ए प्रैक्टिस सेइंग 12 मंथ्स. दैट इज मोस्टली अंडरस्टूड आइडिया. 12 मंथ्स. Okay, sir. 12 months. डेज भी नहीं लिखा है, सो वी काउंट मंथ्स. डेज लिखा नहीं. सो मतलब कि कोई मंथ 31 का होता है, कोई 30 का होता है, कोई 28 का होता है, कोई 29 का होता है. तो डेज लिखेंगे तो आगे पीछे होगा. सो इसे मंथ, तो फरवरी का 28 1 मंथ होगा और 29 1 मंथ ही होगा. तो ऐसा मंथ करते हैं. एंड देन it says that within 12 months from date of filing of the application. And if complete specification is not filed, what happens? Sir, क्या होता है? deemed to have been abandoned. To be abandoned. Abandon और withdrawn क्या होता है? Sir, Abandoned. no होगा. Withdrawn की abandon क्या होता है? Abandoned हो. Sir, abandon. हाँ, करेक्ट. सो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, abandoned है, withdrawn है, कि revoked है, invalid है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं. You could be get confused. इंटरव्यू में कंफ्यूज करते हैं कभी कभी. वो बोलते हैं कि अगर हमने फाइल नहीं किया तो क्या विड्रॉ हो गया क्या वो. तो कभी कभी जब हम लोकली बात करते हैं, कभी कभी ऐसे जिनको पैटर्न का नहीं पता है, हम कुछ समझना चाहते हैं, तो हम उनको बोलते हैं वो एप्लीकेशन विड्रॉ हो गया मतलब. पर इट इज नॉट विड्रॉ, इट इज अबैंडन. तो ये टेक्निकल टर्म याद रखना है. इट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चंस एंड
You get it sometimes. You will see that. So when you practice it. So last year they asked too many questions based on this. Correct. So why I'm saying and discussing that, because we need to discuss each section, उसके आगे पीछे करके डिस्कस करेंगे, देन हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और याद भी रहेगा हमको. सेक्शन 9(1). ओके. एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2? क्या डिफरेंस है Sir, form one is application for filing the patent. So उसमें sir title of the invention और applicant का detail वगैरह होता है. Form 2 basically the specification of the application. That means the content of the invention. Correct. So out of this, which is the application for grant of patent? कौन सा है? Form 1, Form 2? 2. Which is the Form 1, Form 2 में कौन सा application for grant of patent? Sir, Form 1. Form 1 है sir. Yes, correct. So Form 2 is the provisional or complete specification. Okay. And Form is the application for grant of patent. Okay. So when we say that we are filing application for grant of patent, then it just Form 1. Form 1, filling Form 1 is the application for grant of patent, and Form 2 is the complete and or provisional specification. Okay. Now tell me, which section says that if I file Form 1, I must file Form 2? Clear ना? मैंने बताया Form 1 क्या है? Form 1 is application for Section grant. 7. Section 7. Sections. पढ़ के बताओ क्या लिखा है सेक्शन 7 में? Which section says that if I file Form 1, I must file Form 2, otherwise Form 1 is not is abandoned? अब बताओ. सेक्शन 9(1) अभी तो हमने डिस्कस किया हमने, है ना? सेक्शन 9(1) says, है ना, where an Yes, sir. application, है ना, when application for a Yes. patent, है ना, when a patent for application, है ना, so अगर हम फाइल करते हैं तो क्या करते हैं? एप्लीकेशन फॉर पेटेंट फाइल करते हैं तो क्या आता है वो? दिस इज Form 1, राइट? And is accompanied by provisional specification, that is Form 2. Correct? Yes, sir. And then again we need to file again Form 2 for complete specification, otherwise within 12 months, otherwise that is abandoned. Okay. So 9(1) क्या बोलता है कि patent application file along with provisional specification, then file CS within 12 months. And what happens if you file more than 2 provisional specification? Can we combine into 1 CS? कर सकते हैं क्या ऐसा? Yes, sir. When do we do this? Why will we combine more than 2 provisional specifics into 1 complete specification? ऐसे करने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है? This is a question asked in interview many times. Sir, कभी-कभी partly describe किया जाता है, means the invention is partly disclosed in first provisional specification, then maybe followed by a number of specifications. So No, to file a why complete will I- specification. No, why will I describe partly? Why? So I think probably जब आपका invention incomplete phase में होता है, in its initial phase of development, then probably to secure the priority, sometime the inventor may file a provisional specification, and then it may be followed with the number of provisional specifications based on the progress of the work. But whatever has been done, it has to be completed within 12 months, means complete specification
has to be filed within 12 months only from the date of filing of the first provisional specification. Right. So, I mean, you can make a note that this happens in many scenarios. Scenario one, for example, that I today I just conceived an idea, okay, that this compound can be manufactured, this should be composed, something like that. Invention मेरे दिमाग में आया आज, okay, and then मैं ऑफिस में लैब में जा करके I did some small experiment try किया, मुझे आइडिया क्लिक हो गया ऐसा हो सकता है, okay, and then it is always a good idea to file a provision specification to secure the date priority date, okay. लेकिन इसमें एक चैलेंज ये है कि मैंने फर्स्ट टाइम मैंने दे तो दिया मैंने, लेकिन अगर मैंने अच्छी तरह से नहीं लिखा उसको तो कभी कभी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ड्राफ्ट करने में दिक्कत होती है. सो इसीलिए प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन ड्राफ्ट करने में इट रिक्वायर्स सम एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि हम अच्छा से ड्राफ्ट करें, ताकि जब हम कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ड्राफ्ट करें ज़्यादा दिक्कत ना हो. क्योंकि जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है, दैट स्पेसिफिकेशन जो है प्रोविजनल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो सकता. इट कैन नॉट बी समथिंग वेरी डिफरेंट देन द प्रोविजनल. बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता. तो इसलिए क्या होता है कि आज कुछ कंसीव हुआ हमने, फिर दोबारा फाइल किया हमने, ताकि प्रायोरिटी डेट जो है वो ब्लॉक हो जाए मेरा. इसके लिए करते हैं. तो फर्स्ट रीजन इज दैट आई वांट टू ब्लॉक द प्रायोरिटी डेट. मुझे एक आइडिया आया है, उसको ब्लॉक करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने प्रोविजनल फाइल किया. उसके बाद मेरे पास में 12 मंथ्स का टाइम है, उसके अंदर मैं दोबारा काम करके कंप्लीट फाइल कर सकता हूँ. लेकिन मेरा प्रोविजनल का डेट जो है उसने प्रायोरिटी को सेफ गार्ड कर दिया है. तो उसके बाद किसी और ने काम कर दिया, फाइल कर दिया, तो मेरा एप्लीकेशन बाद में दिक्कत नहीं होगी मुझे ग्रांट के समय में, या फिर जब सर्चिंग होगी दिक्कत नहीं होगी, ओके. लेकिन अगर मेरा पूरा नहीं हुआ फर्स्ट टाइम पे, तो आई शुड प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन इन सब्सिक्वेंट एप्लीकेशंस. कुछ रिसर्च डाटा आ गया, कुछ टेस्ट हो गए, कुछ क्या बोलते हैं उसको, एनएमआर कर लिया आपने, उसका जीपीसी कर लिया, कुछ अलग टेस्ट वगैरह कर लिया आपने, कैरेक्टराइजेशन कर लिया आपने, तो करते करते रिजल्ट्स आने में टाइम लगते हैं, तो हो जाते हैं. दूसरा कंडीशन ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक आइडिया है एंड देन आई बिलोंग टू ए कंपनी, और मैं किसी वेंडर को मिलने जा रहा हूँ और उनको बताने जा रहा हूँ कि हम लोग इस पे भी काम कर रहे हैं, डू लाइक टू परचेस फ्रॉम अस, ऐसा मैं बोलने जा रहा हूँ. तो अगर मैं उनको बोल देता हूँ और यहाँ कुछ काम तो भी ज़्यादा हुआ नहीं है, तो आई कैन लूज माई प्रायोरिटी. अगर उसने जाके किसी को बता दिया, कुछ कहीं पे ब्लॉग में लिख दिया, कुछ तो कर दिया उसने. सो ऑल्दो इट मे हैपन दैट कि हमने एनडीए वगैरह साइन किया है, पर यू नेवर नो, उसने कुछ कहीं बोल दिया, पब्लिकली कर दिया. तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप मार्केटिंग टीम से मिलने से पहले, वेंडर से मिलने से पहले, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां दे गुड टोलर्स. तो कंपनी क्या करती हैं कि बहुत सारा जो बल्क में बनाना होता है वो दे कनेक्ट विद सम टोलर्स, और टोलर्स को देती हैं बल्क में बनाने के लिए, ओके. तो अब ऑफिस में क्या होता है, ऑफिस का लैब में या फिर यूनिवर्सिटी का लैब में छोटे लेवल में काम होता है, जिसमें कि प्रोडक्ट बनते हैं ग्राम्स में. उसके बाद उनका किलो लैब होता है, जिसमें आप केजी में बनाते हो, फिर थोड़ा बड़ा बना सकते हैं. लेकिन बहुत बड़ा क्वांटिटी में आपको एक्सपोर्ट करना है या फिर इंडिया में बेचना है उसको, तो 1-2 किलो बना से आप बेच नहीं सकते ना उसको, तो आपको टन्स में बनाना पड़ेगा. टन्स से बनाने के लिए पूरा जो फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी में खाली वही एक सामान बनना पड़ेगा. बहुत बड़ा फैसिलिटी होती है, तो मेक इन टन्स, किलो किलो के आपको सॉल्वेंट और कैटलिस्ट और सब चीज़ें लगती हैं, तो बड़ा सा एरिया चाहिए. पर हम तो बहुत सारे इसमें काम करते हैं, सो दे समटाइम गो टू टोलर्स, टोलर्स को देते हैं बनाने के लिए. तो इसलिए भी जरूरी रहता है कि यू फाइल ए प्रोविजन स्पेसिफिकेशन फर्स्ट बिफोर connecting with them and tell them that you see we have already filed a patent on this. So the moment you say कि हमने patent फाइल कर दिया है, so they are also aware कि उनका rights है. And sometimes marketing के लिए अच्छा रहता है if you can give see we have filed a patent, this is our numbers and this is our price, you can negotiate better price terms. So बहुत सारी strategy होती है, okay. So I'm telling you this extra things because you should know it. If you know this, you become more confident
यू रिमेम्बर दिस, एंड इंटरव्यू में काफी आपका अच्छा रहता है. सो दिस इज द स्ट्रेटेजी, एंड इसी के फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये ऑप्शन रखा गया है कि आप प्रोविजनल फाइल कर लो, जितना आपको आइडिया है फाइल करके अपना जो है सिक्योर कर लो डेट्स वगैरह, एंड देन आप कंप्लीट फाइल कर दो. और अगर मान लो कि 11 महीने हो गए, 12 महीने होने वाले हैं, आपको लगता है कि ये आइडिया बेकार था, इससे कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है, हम कंप्लीट फाइल के क्यों हम पैसा बेकार करें, मतलब तो फिर फाइल मत करो आगे. कुछ ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं. देन यू डोंट टू फाइल द रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, और सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको. देन व्हाट हैपेंस, द एप्लीकेशन इज ऑटोमेटिकली अबैंडन हो जाती है, और वो पब्लिश भी नहीं होती है. किसी को पता चलता नहीं है कि ऐसा कुछ फाइल हुआ था. बट यू हैव, हमें आपका मन का शांति है कि मेरा इन्वेंशन जो है बाहर में लीक नहीं हुआ है. तो इसी जो प्रोसेस है, जनरली कंपनीज में सारे प्रोसेस होते हैं, इसको ही सेफगार्ड करने के लिए ये बनाया गया है. देन अगेन देयर इज CS कैन बी कन्वर्टेड टू PS, है ना, सॉरी, विदिन 12 months, है ना. आई हैव रिटन विद 12 months, नो इट इज विदिन 12 months, एंड अगेन CS कैन फाइल. तो ऐसा क्यों करते हैं, इससे क्या फायदा होगा, कैन यू टेल नाउ? सर पोस्ट डेटिंग. पोस्ट डेटिंग नहीं, पोस्ट डेटिंग नहीं. जैसे मान लो कि अगर हमने एक बार कंप्लीट स्पेस, हाँ बोलिए बोलिए, किसने बोला, टेल मी, आई वांट टू हियर पीसीटी फ्रॉम यू. फाइलिंग के लिए मतलब 31 months का रहता है ना, तो उसके लिए नहीं नहीं, मैं बोला यहाँ पे कि सेक्शन 9.3 से कि अगर हमने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल किया है, उसको हम कन्वर्ट करके प्रोविजनल स्पेसिफिक कर सकते हैं विदिन 12 months, एंड देन विदिन 12 months itself हम दोबारा से कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल कर सकते हैं. तो इससे क्या ओके फायदा सर. है? सर फॉर द फाइन ट्यूनिंग ऑफ द इन्वेंशन समटाइम. हाँ, यू आर राइट. देखो, एक बार हमने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल कर दिया, उसके बाद उसमें इंप्रूवमेंट का कोई चीज चांस नहीं रहा. ओके. तो अगर 9.3 सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 अगर नहीं एग्जिस्ट करता, तो क्या चैलेंज आती कि अगर हमने मान लो कि स्पेसिफिकेशन फाइल करते समय हमने गलती से लिख दिया, मान लो कि हमने क्या किया कि हमने पुराना कोई, जनरली लोग ऐसे ही करते हैं, पुराना स्पेसिफिकेशन उठा लिया उसको फिर मॉडिफाई कर दिया. तो पुराना स्पेसिफिकेशन किसने उठाया, और उसमें लिखा था फर्स्ट पेज में प्रियम्बल में, द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन डिस्क्राइब द इन्वेंशन एंड द मैनर इन विच इट इज टू परफॉर्म, ऐसा लिखा था. और किसी ने ध्यान नहीं दिया, मान लो दे ओवरलुक्ड इट, एंड उसने फाइल कर दिया. फाइल करने के बाद उनको ध्यान है, अरे ये तो हमने द मैनर इन विच इट इज टू परफॉर्म ये भी लिख दिया है, इट बिकम्स कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, लेकिन हमने तो उसमें डिटेल लिखा ही नहीं है बहुत कुछ. फिर तो वो सीधे रिजेक्ट हो जाएगा. वो पेटेंट ऑफिस से आ जाएगा कि इसमें तो क्लेम्स ही लिखा नहीं है, तो मैंने परफॉर्म लिखा नहीं, तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिजेक्टेड हो गया, अभी वो काम ही खत्म हो गया वो अभी. ऐसा कभी गलती हो गया, सो यू हैव ए चांस, आप क्या करो, उनको कांटेक्ट करो, एंड देन से कि हमने जो फाइल किया था इसका नंबर ऐसा है, उसको यू कंसिडर दैट एज ए प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, एंड वी विल अगेन फाइल ए कंप्लीट स्पेसिफिकेशन. ऐसा भी हो सकता है. दूसरा होता है कि आपको लगा कि मेरा आइडिया पूरा सॉलिड है, और अब जो होना था मैंने कर कर दिया, अब कुछ चेंज होना नहीं, यू आर टू कॉन्फिडेंट अबाउट इट, तो इसलिए आपने कहा कि चलो फाइल कर दो. कंप्लीट फाइल होता, आपने क्लेम्स एग्जाम्पल सब फाइल कर दिया. लेकिन लेकिन 12 महीना पूरा होने के मान लो कि कुछ दिन पहले ही आपको रिजल्ट आया, जिसमें कि दिखा रही तो कुछ अलग दिख रहा है, कुछ तो नया कुछ दिख रहा है, ये भी डालना चाहिए था. तो देन आपको फटाफट एक चांस मिलता है आपको कि आप कंप्लीट को फिर से बोलो कि प्रोविजनल है, एंड देन अगेन यू फाइल कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इंक्लूडिंग दोस मॉडिफिकेशन. ऐसा कर सकते हैं, ये फायदा रहता है. ओके. एंड देन 9.4 इज द पोस्ट डेटिंग. ओके. सो व्हाट इज पोस्ट डेटिंग, एनीवन नोस? Sir, it can be maximally for done for 6 months. नहीं, वो तो सेक्शन 17 का है, 17 का है ये. Okay. वो सेक्शन 17 में आता है पोस्ट डेटिंग का. सेक्शन 9.4 का जो पोस्ट डेटिंग है वो दूसरा है, क्या है?
सर एज यू हैव मेंशन्ड, अगर कोई पीएस का कुछ हमने कैंसिल कर दिया, उसके जगह पे सीएस में वो मॉडिफाई कर दिया, तो उस क्लेम का डेट जो रहेगा सीएस में, दैट इज टेकन एज द फाइलिंग और हाँ सर डेट क्लेम. Sir, I think if somebody is unable to file the complete specification within maybe 12 months, then if he wants to borrow some time, then probably it may be done. नहीं नहीं, 9(4) जो है, सेक्शन 9(4), ठीक है, क्या बोलता है देखिए, where complete specification has been filed in pursuation of an application for patent accompanied by a provisional specification. ओके, तो हमने क्या किया, हमने पहले एक प्रोविजनल फाइल किया था, और बाद में फिर हमने एक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल कर दिया हमने. ओके ओके, एंड देन इफ द एप्लीकेशन सो रिक्वेस्ट एनी टाइम बिफोर द ग्रांट. ओके, मतलब कि आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रोसीक्यूशन चालू हो चुका है, मतलब आपने एक प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल किया था, विद इन 12 मंथ आपने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन भी फाइल किया था आपने. तो फॉर एग्जांपल आपने फाइल किया प्रोविजनल वाला 1 जनवरी को फाइल किया, और आपने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल कर दिया 30 अक्टूबर को फाइल कर दिया आपने. ओके, सो देयर इज अ गैप, फाइल कर दिया है, और आपका एप्लीकेशन प्रोसिक्यूट हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, आपका एग्जामिनेशन हो रहा है, ग्रांट का लेटर आया नहीं आपके पास में कि योर एप्लीकेशन ग्रांटेड, ऐसा लेटर आया नहीं है. देन अगर आप चाहते हो, देन यू कैन कॉन्टेक्ट द कंट्रोलर एंड से कि मेरा जो प्रोविजनल है उसको कैंसिल कर दीजिए, एंड जो मेरा कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है उसको ही मान लीजिए एज अ डेट ऑफ फाइलिंग. तो उसको फाइनल डेट मान लीजिए, तभी आपका गैप तो बहुत हो गया, इट इज मोर देन 6 मंथ का गैप हो चुका है. प्रोविजनल फाइल किया है, देन कंप्लीट फाइल किया है, ज्यादा गैप हो चुका है. तो आप कहते हैं कि यू कंसिडर द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जो डेट है उसको कंसिडर कीजिए फाइलिंग डेट के लिए, प्रोविजनल को कैंसिल कर दीजिए. तो आपका डेट क्या हो गया, चेंज हो गया. अभी आपका फाइलिंग डेट 1 जनवरी ना होकर के 30 अक्टूबर हो गया. दैट इज कॉल्ड पोस्ट डेटिंग एज पर सेक्शन 9(4). ठीक है, एंड दिस हैज टू डन बिफोर द ग्रांट. अगर ग्रांट एप्लीकेशन हो गया है तब आप नहीं कर सकते. आप ग्रांट होने के पहले ही आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा आपको, अंडर सेक्शन 9(4). दिस कॉल्ड पोस्ट डेटिंग. ठीक है, ओके. एंड पोस्ट डेटिंग अंडर अंडर सेक्शन 17, इसमें क्या होता है, दैट इज डेटेड बाय 6 मंथ. ओके, it is for the 6 month, and this post dating is not applicable for the convention application. Convention application में post dating का concept नहीं लागू होता है. So that is only for the Indian application जो हमने फाइल किया है उसके लिए post dating होती है under section 17, and that can be done by 6 months. You can change the date by 6 months for the filing date. Okay, so there are different types of application that we file. One is our ordinary application, then divisional application, and then conventional application, then national PCT phase, and then the patent of addition. Anyone knows difference between all these applications? किसी को पता है? और थोड़ा बहुत पता है सर, बहुत ज्यादा नहीं. हाँ बताइए. सर एक तो सर जो ऑर्डिनरी फाइलिंग होता है वो जो नॉर्मली हम लोग फाइल करते हैं. हाँ, कन्वेंशन होता है इफ समथिंग इज फाइल्ड इन कन्वेंशन कंट्री, दैट करेक्ट. मींस विद इन 12 मंथ्स के ड्यूरेशन में जितने कंट्री में हम लोग फाइल करेंगे. हाँ हाँ, एक तो सर डिविजनल फाइलिंग हो, तो इफ देयर इज अ लैक ऑफ यूनिटी इन द इन्वेंशन देन वी कैन गो फॉर डिविजनल फाइलिंग. ये एक हो गया. और सर और कौन सा ऐसा भूल गया? पेटेंट ऑफ एडिशन. पेटेंट ऑफ एडिशन. पेटेंट ऑफ एडिशन इफ देयर इज ऑलरेडी ए ग्रांटेड पेटेंट और उसमें हम लोग कुछ एक्स्ट्रा एडिशन करते हैं, बट उसमें वैलिडिटी वही प्रीवियस पेटेंट का ही रहेगा, सो उसको सर हम लोग पेटेंट ऑफ एडिशन कहते हैं सर. तो एडिशन एंड डिविजनल में क्या डिफरेंस रह गया फिर? सर डिवीजन, सर आपका पेटेंट एक इन्वेंशन के लिए होना चाहिए रहता है. अगर उसमें 2 इन्वेंशन क्लब किए गए हैं तो कंट्रोलर टेल्स यू टू फाइल अ डिफरेंट पेटेंट फॉर द सेकंड इन्वेंशन. हाँ हाँ,
डिविजनल पेटेंट। ओके और पेटेंट ऑफ एडिशन, अगर कोई मेन इन्वेंशन है उसको आप कुछ ऐड कर रहे हो तो वो सेकंड पेटेंट हो जाता है, दैट इज पेटेंट ऑफ एडिशन। करेक्ट। सो इफ आई अंडरस्टैंड, सो डिविजनल है कि अगर यूनिट ऑफ इन्वेंशन नहीं है, मतलब है ना, एक पेटेंट में मोर देन वन इन्वेंशन है, देन यू कैन ब्रेक इट। और एडिशन इज फॉर इम्प्रूवमेंट, एनी इम्प्रूवमेंट यू डू देन। और क्या डिफरेंस है इसमें? सर प्री मतलब ग्रांट से पहले डिविजनल एप्लीकेशन अप्लाई होता है और ग्रांट के बाद पेटेंट ऑफ एडिशन यूज होता है। आर यू लो श्योर? यस सर, ग्रांट के बाद पेटेंट ऑफ एडिशन यूज होता है। कौन सेक्शन है बताओ? कौन सा सेक्शंस नहीं पता सर। हाँ, पता होना चाहिए ना सेक्शंस। यस सर। जाके कोर्ट में जाओगे लड़ने के लिए तो मतलब बोलना पड़ेगा ना, इस सेक्शन के अंदर है ना। सेक्शन 54 to 56 क्या है? सेक्शन 54 to 56 इज अबाउट द पेटेंट ऑफ एडिशन। डिविजनल का 10 और डिवीजन का क्या है? 10 16 है। और यूनिट ऑफ इन्वेंशन का क्या है? 10 का 5। क्या है 10 का? सेक्शन 10 का 5 क्या बोलता है? द क्लेम और क्लेम्स ऑफ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन shall relate to a single invention or to a group of invention linked so as to form a single inventive concept, shall be clear and succinct and shall be fairly based on the matter disclosed in the specification. So the claims या क्लेम्स जो है क्या होना चाहिए? एक सिंगल इन्वेंशन के लिए होना चाहिए, ऐसा इट इज एज पर सेक्शन 10 सब सेक्शन 5। ओके। एंड सेक्शन 16 जो है, सेक्शन 16 सेज कि अगर ये सेक्शन 10 का 5 अगर नहीं होता है, देन 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 वी कैन फाइल डिविजनल। या तो हम खुद से फाइल कर सकते हैं, या इट कैन बी फाइल्ड बाय it can be filed based on the FER, first examination report, and divisional need to file before the grant of the patent. That is okay. Okay. So section 16 क्या बोलता है regarding divisional? Divisional request to be made before grant of the patent, and then it can be made on the request of the applicant, or it divisional can also be filed to overcome objections in FER, first examination report, and complete specification claims more than one invention. That is section 10 subsection 5. And then section 16 क्या बोलता है कि the matter of divisional application not to include matter not disclosed in complete specification. कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में जो डिस्क्लोज किया गया है पूरा डिस्क्रिप्शन में, उसके उससे से ज्यादा चेंज होना नहीं चाहिए। मतलब आपने डिस्क्लोज बहुत सारा चीज कर दिया है, लेकिन जो क्लेम है, क्लेम कैन बी ओनली फॉर वन इन्वेंशन। ओके। अगर लगता है क्लेम इट इंक्लूड मल्टीपल इन्वेंशन, ओके, देन इस डिवाइड होता है। लेकिन डिवाइड होने के बाद भी जो डिस्क्रिप्शन है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जो प्राइमरी था हमारा, जो डिस्क्रिप्शन है, उसमें वो सब बातें होनी चाहिए, तभी हम डिवीजन बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने जो डिवीजन में फाइल किया है और जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है उसमें उस बात का चर्चा ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि एक पेन का, आई वांटेड टू फाइल अबाउट ए पेन, एंड देन आल्सो आई से दैट पेन के साथ में इट बिकम्स रॉकेट, फॉर एग्जाम्पल, वेरी विजार्ड। सो कुछ दो चीजें हैं, तो पेन और पेन का रॉकेट, या फिर मान लो कि पेन का कुछ फ्लाइंग वाला पेन हो, या कुछ एआई कंट्रोल पेन, ऐसा कुछ तो भी हो, तो दो चीजें जो है क्लेम हो नहीं पाएगी। लेकिन जो डिस्क्रिप्शन है उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। एक पेन जो फ्लाई कर सकता है, एक पेन जो रॉकेट है, एक पेन जो नॉवल लिखता है, एक पेन जो एआई एनेबल्ड है, ये सारा चीजें डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। एंड
and an embodiment or element of the invention is this, that pen can fly, pen can become a rocket, pen can become artificial intelligent, pen can click a photograph. ये सब चीजें डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। लेकिन जो क्लेम करने के लिए गए, तो क्लेम में यू कैन ओनली क्लेम अ पेन व्हिच कैन फ्लाई, pen which can which is like a rocket is different than pen can fly, so दो इन्वेंशन हो जाएगी। तो पेटेंट ऑफिस बोलेगी कि यू ब्रेक इट इन टू डिफरेंट पार्ट्स एंड फाइल ए डिविजन एप्लीकेशन। लेकिन पेन फ्लाई कर सकता है, पेन एक रॉकेट है, पेन में कैमरा है, पेन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सब चीजें मेरे डिस्क्रिप्शन में होनी चाहिए। दिस इज व्हाट इट सेज, मैटर डिविजनल नॉट टू इंक्लूड मैटर नॉट डिस्क्लोज इन complete specification. Okay, then it says claims are divisional should be different from the claims of original. तो जो complete specification जो फाइल किया था उसमें जो क्लेम लिखा गया है और डिविजनल क्लेम दोनों एक होना नहीं चाहिए। हमने अलग किया है तो हमको उसको मॉडिफाई करके दोबारा दोनों फाइल करने पड़ते हैं। कई बार जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन था उसको भी मॉडिफाई करना पड़ता है, क्योंकि जो हमने ओरिजिनली फाइल किया था उसमें तो हमने पेन के उसके जो रॉकेट, पेन हुज कैन फ्लाई, पेन उसमें जो एआई है, पेन में फोटो खींच सकता है, वो सारा फीचर हमने डाल दिया था उसमें हमने। तो अब उसने बोला कि नहीं, अब 5 एप्लीकेशन कर दो, यू फाइल 5 डिविजन एप्लीकेशन, सब अलग अलग। तो जो मेरा ओरिजिनल कंप्लीट स्पेसिफिकेशन था उसको हमें चेंज करना पड़ेगा, चेंज करके वो एक हो जाएगा ओरिजिनल वाला जिसमें लिखा है पेन कैन फ्लाई। ओके, जो डिविजनल 1 फाइल करूंगा उसमें सारा स्पेसिफिकेशन में लिखूंगा पेन व्हिच इज रॉकेट, थर्ड होगा पेन व्हिच इज ए कैमरा, फोर्थ होगा पेन व्हिच इज समथिंग लाइक दैट व्हिच इज रॉकेट, समथिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला है। ऐसे करके होता है, बट क्लेम जो है सबका अलग अलग हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने एक कंप्लीट में फाइल किया उसमें पांचों चीज क्लेम कर लिया फिर डिवीजन फाइल कर उसमें एक एक करते रहे, ऐसा नहीं होता है। ओके, एंड देन देयर इज एंटी डेटिंग। ओके, तो एंटी डेटिंग क्या होता है कि जो फाइलिंग जो डेट होती है डिविजनल का वो चला जाता है पीछे। मतलब कि हमने तो प्रोविजनल फाइल किया, मान लो कि हमने 1 जनवरी को फाइल किया फॉर एग्जांपल, फिर हमने कंप्लीट फाइल किया, हमने अक्टूबर में फाइल किया हमने। अब जो कंप्लीट फाइल किया है वो एग्जामिन होगा, एग्जामिन होने के बाद पकड़ लो कि 6-8 महीने के बाद हमको रिपोर्ट आया, एफआईआर रिपोर्ट आई, उसमें बोला गया कि डिवीजन फाइल करो, लेकिन वो ऑलरेडी 1.5 साल हो चुका है वो करते करते। फिर मैंने डिवीजन फाइल किया 1.5 साल के बाद, लेकिन जो डिवीजन मैंने फाइल किया आफ्टर 1.5 ईयर, उसका जो फाइलिंग डेट है वो होगा प्रोविजनल का, जो मेरा फर्स्ट मैंने फाइल किया था, कब, 1 जनवरी फाइल किया था। लेकिन इसमें कंडीशन एक ये है कि जो मैटर डिस्क्लोज किया था हमने वो कंप्लीट में था कि प्रोविजनल में था, वो देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से फाइलिंग डेट काउंट हो जाएगी। क्योंकि हम जनरली कंप्लीट में थोड़ा ज्यादा मैटर डालते हैं उस पर बेस करके, तो कभी कभी चेंज हो जाए डेट। अदरवाइज अगर सेम मैटर है, अगर हमने प्रोविजनल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके सारी चीजें, तो प्रोविजनल डेटिंग, तो इसलिए इसको एंटी डेटिंग। ओके, सो डिवीजन में एंटी डेटिंग हो जाती है, मतलब डेट चली जाती है पीछे। ओके, एंड डिविजनल एप्लीकेशन नंबर में क्या होता है, जो ओरिजिनल एप्लीकेशन नंबर है वो उसमें मेंशन की जाती है अंडर सेक्शन 13(2). ओके, एंड देयर कुड बी मोर देन 1 डिविजनल एप्लीकेशन बेस्ड ऑन आइदर प्रोविजनल या complete specification, rule 13(2)(a). So you can open the book and read rule 13(2)(a). इसको आप पढ़ना सीखिए हैं, it is very important that you read this. So specification 13(2) क्या बोलता है, a specification in respect of a divisional application under section 16 shall contain a specific reference to the number of the original application from which the divisional application is made. तो अगर हम डिविजनल एप्लीकेशन देखते हैं, then I can always get back the original application number. So if a question is asked to you, okay, that how do I know if I'm looking at the divisional application, how do I know that it is a divisional application? Can you tell? एप्लीकेशन नंबर मेंशन होगा ना उसमें। हाँ, you are right. Application number mentioned and it will say that it is a division application of this application number, ऐसा mention होगा। And then it says a patent applicant may, if he so desires, file 1 or more further application under section 16, including
aspect of invention disclosed in the provisional or complete specification or a further application filed under section 16. तो डिविजनल का भी डिवीजन हो सकता है, समझे आपने? आपने डिवीजन फाइल किया है, उसका भी आप फर्दर डिवीजन फाइल कर सकते हो, सीएस का भी फाइल कर सकते हो, प्रोविजनल का फाइल कर सकते हो। तो बेसिकली लोग क्या करते हैं जनरली कि जो प्रोविजन फाइल करते हैं ना, उसमें बहुत सारी चीज डालते हैं इंफॉर्मेशन, ताकि उनको फिर दिक्कत ना हो बाद में। दे कैन प्रोटेक्ट देयर इन्वेंशन बाय फाइलिंग फॉर द डिवीजन एप्लीकेशन। तो इसलिए प्रोविजनल में बहुत कुछ डाल देते हैं कई बार। ओके, लेकिन कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में बहुत कुछ डालने से क्या होता है कई बार? ना यू टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम इफ इफ if I disclose more in provisional specification, okay, and if I disclose more in complete specification, हाँ, तो क्या फायदा है, क्या नुकसान है? टेल मी, कौन बताएगा? मेरा क्वेश्चन क्लियर है ना? मत जैसे मैं एग्जांपल लेता ना, पेन का एग्जांपल लेता है, ये जो पेन जिसमें एआई है, एक पेन जिसमें जो कि उड़ सकता है, एक पेन जो रॉकेट बन सकता है, मतलब एक पेन जो स्पाई कर सकता है, उसमें कैमरा लगा हुआ है, ऐसा एक पेन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद ही लिखता है, हमने बोल दिया खुद ही लिखता है सब कुछ वो। तो ऐसा हमने 4-5 कॉन्सेप्ट है। ये सारे कॉन्सेप्ट अगर हमने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन डाल के फाइल किया है या हमने कंप्लीट में फाइल कर दिया है, दोनों में क्या फायदा क्या नुकसान है? व्हाट इज एडवांटेज एंड व्हाट इज डिसएडवांटेज, बताइए। सर प्रोविजनल को वेरीफाई किया जा सकता है बाद में, और कंप्लीट में नहीं हो पाएगा, दे चुके हैं नहीं, ऑलरेडी। आपका आवाज ना कट गई, फिर से बोलिए। सर आवाज आ रहा है? अभी आ रहा, पहले कट गया था, फिर से बोलिए क्या नहीं बोला? सर, प्रोविजनल हम चेंज कर सकते हैं बाद में। जी सर, और कंप्लीट नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत ओके, उसी का है। ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि प्रोविजनल को हम चेंज कर सकते हैं बाद में, कंप्लीट को हम चेंज नहीं कर सकते, ये एक प्रॉब्लम है। और क्या बताइए? प्रोविजनल में अगर मैक्सिमम क्लेम्स करेंगे तो कंप्लीट में इशू नहीं आता है वो कन्वर्ट करने में। अगर कंप्लीट में ज्यादा क्लेम्स एंड वो होगा तो उसमें इश्यूज आ सकता है, और फिर आगे जाके ये डिविजनल वगैरह वो सब फाइल करना पड़ता करेक्ट, यू आर राइट, करेक्ट करेक्ट। और भी कुछ है? है। फीस भी ज्यादा लगते हैं ना, और मतलब क्लेम्स अगर एक्सटेंड हुए, नंबर ऑफ पेजेस भी एक्सटेंड होते हैं, तो फीस का भी हो सकता है। हाँ हाँ, ये भी है। और जो एक जो बहुत आपने सही बोला, एक और बात ऐसा है कि अगर हमने प्रोविजन में ज़्यादा को डिस्क्लोज किया है, ठीक है, तो हमारे पास में चांस क्या रहता है कि एडवांटेज रहता है कि हम कैन ऑलवेज फाइल एज मेनी डिवीजन एप्लीकेशन, है ना, हम फाइल कर सकते हैं, है ना, एंड देन वी कैन कवर इन कंप्लीट, फायदा फायदा रहता है। और अगर हमने कंप्लीट में हमने बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज कर दिया है और उसके बाद हमने फाइल नहीं किया, तो क्या होता है कि जब हम दोबारा फाइल करने जाएंगे, क्योंकि मान लो हमने डिस्क्लोज कर दिया कि हमारा पेन जो उड़ सकता है, रॉकेट बन सकता है, एआई हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, डिस्क्लोज कर दिया, लेकिन यूनिटी इन्वेंशन के लिए हमने केवल क्लेम किया हमारा पेन जो एआई एनेबल्ड है, मान लो इतना हमने क्लेम किया, बाकी हमने क्लेम नहीं किया, हमने हमने फाइल नहीं किया हमने, क्योंकि वो यूनिटी इन्वेंशन में आएगा नहीं, ठीक है। तो अभी चैलेंज क्या हो जाएगा बाद में कि जब हम दोबारा पेटेंट फाइल करने जाएंगे बाद में, सो व्हाट हैपेंस दैट हमारा खुद का पेटेंट जो है विकास से प्रायर आर्ट, और हम फाइल नहीं कर पाएंगे बाद में। सो इसीलिए हमको ये सब में बहुत सावधान रहना चाहिए। आपको समझ में आया? आपको शुड एक्सप्लेन मोर? सर प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन। ओके, हाँ, आप पूछिए, जितना आप पूछेंगे अच्छा है। तो जैसे मान लो कि सेक्शन 16 क्या बोलता है? बिफोर द ग्रांट ऑफ पेटेंट आई शुड फाइल द डिविजनल। तो एक हमने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल किया हमने, उसमें हमने बताया कि पेन है
जो रॉकेट बन सकता है, पेन जिसमें एआई है, पेन जो उड़ सकता है, पेन जिसमें कैमरा है, ऐसे बहुत सारे हमने बोल दिया हमने। लेकिन हमने क्या फाइल किया, सिर्फ क्लेम किया है, पेन जिसमें एआई एनेबल्ड पेन है, हमने खाली वही क्लेम करके हमने पेटेंट फाइल कर दिया। तो उसमें पेटेंट ऑफ मान लो कि यूनिटी रहा, और उसमें कोई नंबर ऑफ ज्यादा इन्वेंशन नहीं हो, हमारा ग्रांट ग्रांट हो जाता है। अब बाद में हमको याद आया कि अरे हमको तो पेन जो रॉकेट बन सकता है, पेन जो उड़ सकता है, उसको फाइल करना चाहिए। तो जैसे ही आप वो फाइल करने जाओगे ना, तो जब सर्च होगा तो आपका ही एप्लीकेशन निकल के आ जाएगा कि कहीं तक किसने डिस्क्लोज किया है, ए पेन व्हिच कैन बिकम ए रॉकेट लाइक काइंड ऑफ थिंग, किसने डिस्क्लोज कर दिया, तो फिर आपका ही पेटेंट फाइल नहीं हो पाएगा। इट बिकम्स ए प्रायर आर्ट फॉर योर ओन थिंग। तो इसीलिए अगर आपने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में अगर आपने बहुत ज्यादा से डिस्क्लोज कर दिया है, ओके, तो आपको डिविजनल फाइल कर देना चाहिए बिफोर द ग्रांट, जिससे कि आपका इन्वेंशन आपके पास सुरक्षित रहेगा। तो इसीलिए ड्राफ्टिंग में बहुत ध्यान करना चाहिए। ड्राफ्टिंग इज नॉट समथिंग कि आपने कुछ पेटेंट फाइल कर दिया, ड्राफ्ट कर दिया और आपको ग्रांट हो गया है, उतने से काम बनता नहीं है। ड्राफ्टिंग इज वेरी स्ट्रेटेजिक एंड इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ स्किल। क्या ड्राफ्ट करना है, कब ड्राफ्ट करना है, कितना लिखना है, कितना नहीं लिखना है, वो सब चीज काफी इट शुड बी वेरी it should be very done on I mean done on the based of some strategy, some discussion, some priority। अब क्या प्रायोरिटीज है, व्हाट इज योर गोल, व्हाट यू वांट टू अचीव विद दिस पैटर्न, ये सब सोच के करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने सब डिस्क्लोज कर दिया है और आपने डिविजनल फाइल नहीं किया आपके लिए ही, देन और पेटेंट एडिशनल फाइल नहीं करते हो, ऐसा कुछ इम्प्रूव फाइल नहीं करते हो, तो क्या होगा, देन यू लूज आउट to protect your own invention, and then others can always copy that and launch new product, and then you cannot do anything। so इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। so this is just for your understanding। तो जितने भी provisions हैं डिविजन फाइल करने के, so it is not that you just memorize कि हाँ ये होता है। you try to understand what is the motive, who is getting benefited by doing this, किसको फायदा हो रहा है, how I can get more benefited। when you start thinking like this, तो आपको पेटेंट एक्ट जो है बहुत लगेगा, बहुत छोटा है, इतना बड़ा नहीं लगेगा आपको, तो लगेगा बहुत छोटा है, बहुत सिंपल सा तो है, बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, एंड देन यू कैन आंसर एनी क्वेश्चंस। लेकिन अगर आप सिर्फ याद करने की कोशिश करते हो कि डिविजनल फाइल करना है बिफोर ग्रांट, डिविजनल फाइल करना है, ऐसा करना है, डिविजनल फाइल ऐसा करना है, तो वैसे आपको बहुत डिफिकल्ट होता है याद करने के लिए। लेकिन इफ यू अंडरस्टैंड कि क्या पर्पस था, किस पर्पस की वजह से इस सब सेक्शन को इसमें डाला गया है, किसके वजह से उसको निकाल दिया जाता है। कई बार हम देखते हैं अमेंडमेंट होता है, कुछ को निकाल दिया जाता है, क्यों निकाल दिया जाता है, क्यों ऐड किया जाता है, दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि पेटेंट का लाइफ साइकिल में क्या क्या स्ट्रेटेजी होती है, क्या क्या फायदे नुकसान होते हैं। यू शुड ऑलवेज थिंक अबाउट इट, एंड दैट इज समथिंग यू कैन डिस्कस। सो क्लास के समय यू कैन ऑलवेज डिस्कस विथ मी, एंड आई एम हियर टू आंसर दोज क्वेश्चंस। ओके, सो पेटेंट एडिशन, राइट। सो वो क्या बोलता है, सेक्शन 54, 55, 56। सो पेटेंट इम्प्रूवमेंट और मॉडिफिकेशन टू मेन पेटेंट, मेन इन्वेंशन, यू कैन फाइल ए पेटेंट एडिशन, है ना। और क्या कर सकते हो, यू कैन इफ द पेटेंट रिवोक हो जाती है, जो इम्प्रूवमेंट और मॉडिफिकेशन द पेटेंट रिवोक हो जाता है, देन एंड पेटेंट एडिशन कैन रिमेन एज अ separate granted patent। okay, filing date of patent of edition is same, should be same and not later than the main invention। वो उससे बाद में होना नहीं चाहिए, ठीक है। and patent of edition is not granted before the grant of main invention। okay, and term of patent edition is same as the main invention। okay, and if the main invention is revoked, okay, मतलब किसी कारण से रिवोक्ड हो गया वो, okay, then patent edition becomes the main patent। one thing is that no renewal fees is there for the patent edition, okay, unless it is converted as a main invention। अगर आपने डिविजनल फाइल किया है तो डिविजनल का तो आपको अलग से पेटेंट रिन्यूअल फी पे करना पड़ता है, लेकिन पेटेंट एडिशन का फी आपको पे नहीं करना पड़ता, आपको इट इज फ्री रहता है, अनलेस जो मेन पेटेंट है वही रिवोक हो गया, and then you convert the main patent as the patent edition as the main invention, तब तक आप
पे नहीं करना पड़ता। और देन दूसरा क्या बात है कि पेटेंट एडिशन इज नॉट इनवैलिडेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट कि ये इन्वेंटिव स्टेप, मतलब कोई ऐसा नहीं कह सकता कि जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है उससे ज्यादा इसमें क्या है। तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जो है इट इज not ground for invalidating the patent edition. So these are a few things you can remember for the patent edition. Okay. Then I have something for the convention application. Okay. So we discussed about the divisional, then addition, then convention. So section 133. Section 133 is for the convention countries, and there are 176 countries plus EPO, RIPO, OAPIO, and EAPO. किसी को पता है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ दिस, क्या होता है सब ये? एनीवन नोज अबाउट दिस? Yes, sir. Europe, Eurasia. यूरोपियन पेटेंट ऑफिस। हाँ हाँ, ईपीओ यूरोपियन पेटेंट ऑफिस। एराइपो क्या है? एराइपो नहीं पता सर, बाकी का पहले नहीं देखा सर। कोई बात नहीं। अफ्रीकन रीजनल इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसमें कुछ कुछ कंट्रीज हैं जैसे बोत्सवाना, गाम्बिया, घाना, केनिया, मालावी, जिम्बाब्वे, उगांडा, जिम्बाब्वे, तांजानिया, ये सब कंट्रीज हैं मिलकर हैं। जैसे यूरोप में कंट्रीज है ना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, सिप्रस, डेनमार्क, जर्मनी, इटली, पोर्टुगल, ये सब चीजें कंट्री जैसे यूपीओ में है वैसी एराइपो, अफ्रीकन रीजनल इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इस एराइपो है। एंड देन ओआईपी है। तो अफ्रीका में दो है, अफ्रीकन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ओआईपी है, एंड देन अफ्रीकन रीजनल इंडस्ट्री प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये दो अलग बने हुए हैं। तो दोनों में नंबर ऑफ कंट्रीज डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, आई डोंट सी दैट देयर इज समथिंग कॉमन बिटवीन दिस टू कंट्रीज, दोनों अलग अलग कंपनी में कंट्रीज हैं। एंड देन देयर इज ए यूरेशियन पेटेंट ऑफिस, जिसमें कि अजरबैजान, आर्मेनिया, बेलारूस, देन जॉर्जिया, कजाकिस्तान, मोल्डोवा, रशियन फेडरेशन, तजाकिस्तान, यूक्रेन एंड तुर्कमेनिस्तान, ये सब यूरेशिया में आते हैं। तो एक यूरोपियन हो गया, एक यूरेशियन हो गया, एक एराइपो एंड एक ओएपीआई। तो ये सारे हो गए। तो कन्वेंशन कंट्री पे आता है 176 प्लस दिस कंट्रीज। सो दिस मे कम इन योर फर्स्ट पेपर एंड ऑल्सो इट कैन बी आस्क्ड एज ए पार्ट इन द इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। ओके, एंड देन 134 कंट्री नॉट रेसिप्रोकेटिंग विद इंडिया। अगर इसमें से किसी कंट्री ने बोला कि क्या बोला उन्हें कि हम जो जो राइट अपने सिटीजन को देते हैं, वी विल नॉट ग्रांट द सेम राइट टू इंडियन सिटीजन। अगर ऐसा करते हैं तो फिर इंडियन पेटेंट ऑफिस काफी स्ट्रिक्ट है इस मामले में। हमारा एक सेक्शन है वो बोलता है कि फिर हम भी तुम्हारे कंट्री के लोगों को यहाँ पेटेंट फाइल करने वगैरह नहीं देंगे। ओके, एंड बाकी देन इट्स लाइक इन द कन्वेंशन एप्लीकेशन यू शुड रिमेंबर दैट इट्स कॉल्ड बेसिक एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं इसको? बेसिक एप्लीकेशन, जो किसी कंट्री में फाइल हुआ है एंड देन विद इन 12 मंथ्स ओके इंडिया में फाइल उन्हें करना चाहिए। ओके, और अगर इफ द फाइल इन मोर देन वन कंट्री, अगर एक कंट्री ज्यादा कंट्री में फाइल किया उन्होंने और फिर इंडिया में आए, बाद में इंडिया में आए मतलब, ठीक है, तो हम क्या व्हाट वी कंसिडर इज दैट फर्स्ट एप्लीकेशन जो फाइल किया था जिस कंट्री में, उस कंट्री के डेट से हम डेट काउंट करेंगे हम। ओके, नॉट द लास्ट वन, फर्स्ट जो फाइल किया था हम काउंट करेंगे। आप इंडियन जब भी आओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले 10 कंट्री में फाइल कर लो पहले आप, उसके बाद इंडिया में आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जब इंडिया में फाइल करोगे तो 12 महीने के अंदर फाइल करने आपको। ओके, कभी कभी लोग क्या करते हैं कि उनको उनको लगा कि हमने 2-3 एप्लीकेशन फाइल किए हैं, जैसे कि अपना था सेक्शन 9 में जो था कि हम वी कैन कंबाइन डिफरेंट एप्लीकेशन टुगेदर, सेक्शन 9 में था। सो वी कैन कन्वेंशन भी कंबाइन कर सकते हैं। देखिए हमारे में क्या है कि हम कंबाइन करते हैं और एक कॉमन कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करते हैं, तो हम खाली एक ही फी पे करते हैं। लेकिन कन्वेंशन कंट्री में जब हम 2-3 एप्लीकेशन कंबाइन करके एक फाइल करते हैं, तो हमको जितने एप्लीकेशन कंबाइन किए हैं उतने का फी पे करना पड़ता है, विच इज काउंटेड एज ए सेपरेट इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन, उतना फी पे करना पड़ता है। यानी पीसीटी एप्लीकेशन फाइल किया हमने और उसमें इंडिया को डेजिग्नेट किया हुआ है, सोनी फाइल पीसीटी एप्लीकेशन,
कंट्री डेजिग्नेट करने पड़ते हैं कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं विदिन 31 मंथ्स. ओके, एंड देन वी क्लेम प्रायोरिटी फ्रॉम एन इंडियन एप्लीकेशन. तो हमने एक इंडियन एप्लीकेशन फाइल किया था, उसके बाद हमने पीसीटी फाइल कर लिया, और पीसीटी में हमने प्रायोरिटी क्लेम किया इंडियन एप्लीकेशन से. एंड देन इंडिया को डेजिग्नेट किया हुआ है हमने कि हम पीसीटी के रूट के थ्रू भी इंडिया में आने वाले हैं. तो इस कंडीशन में तो जो पहला जो एप्लीकेशन इंडिया में फाइल हुआ था उसको ही एग्जामिन करते हैं. ओके, दिस यू शुड नो. एंड मल्टीपल प्रायोरिटीज का क्या है, कभी भी इंडिया में भी ऐसा ही है. अगर हम दो तीन डॉक्यूमेंट कंबाइन करते हैं, दो तीन प्रायोरिटी डेट कंबाइन करते हैं, देन वी फाइल वन डॉक्यूमेंट. तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी था, जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट था, फर्स्ट डेट को ही कंसिडर किया जाता है. ओके, एंड सेकेंड थिंग जो आपने सीखना चाहिए वो ये है कि कभी कभी क्या होता है कि व्हेन वी कंबाइन टू एंड मोर डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें क्या हो जाता है कि द मैटर चेंजेस, मतलब किसी में कुछ डिस्क्लोज किया है, किसी ने डिस्क्लोज नहीं किया है, एंड देन वी आर ट्राइंग टू कंबाइन फाइल वन एप्लीकेशन, और उसमें फिर दो तीन क्लेम हो गए हैं. तो क्लेम जब एनालिसिस करते हैं किसी लीगल पर्पस के लिए, तो वो देखना रहता है कि ये मैटर किस एप्लीकेशन में डिस्क्लोज किया गया था. तो फॉर एग्जांपल, हमने एक एप्लीकेशन में फाइल किया, फिर दूसरा फाइल किया, फिर तीसरा फाइल किया, ऐसे तीन एप्लीकेशन फाइल किया हमने अलग डेट में, पकड़ लो 2-2 महीने के अंतर में फाइल किया हमने. ठीक है, और बाद में हमने फिर 2 महीने बाद फिर से हमने एक कंबाइन करके फाइल कर दिया हमने, और हमने 4 क्लेम डाल दिए, 1 2 3 4. तो जो पहला क्लेम था, अगर उसका जो मैटर फर्स्ट डिस्क्लोज हुआ था फर्स्ट एप्लीकेशन में, तो उसका डेट पहला होगा. सेकेंड क्लेम का डेट सेकेंड एप्लीकेशन का फाइलिंग डेट होगा. थर्ड क्लेम का डेट होगा थर्ड एप्लीकेशन फाइलिंग डेट होगा. तो इस तरह से एक ही एप्लीकेशन में डिफरेंट क्लेम्स के डेट अलग अलग भी हो सकते हैं. समझ में आया आपको? शुड आई एक्सप्लेन अगेन? क्लियर ना? So if you're not saying anything, I should understand this is clear. So should remember this, क्योंकि कई बार इस पे क्वेश्चन आता है कई बार ना, एंड देन यू गेट कंफ्यूज कि इसमें अभी क्या करना है, इसमें प्रायोरिटी डेट कौन सा होगा. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन में बी आस्क्ड, एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आल्सो आस्क्ड इन इंटरव्यू. ओके, सो आई एम ट्राइंग टू गिव यू द एक्सपीरियंस that is required for you to become a successful pattern agent. सो ओवरऑल जो है इस स्लाइड्स में जो है हमने ट्राइंग टू गिव बना करके कि क्या क्या फॉर्म्स लगते हैं. तो यू कैन से ओवरऑल फॉर्म 1 and 2 चाहिए, देन फॉर्म 3 चाहिए इफ देयर इज फॉरेन फाइलिंग लगता है. ओके, एंड देन इन्वेंटर से डिक्लेरेशन के लिए फॉर्म 5 चाहिए, एंड इफ यू आर क्लेमिंग द एमएसएमई स्टेटस देन फॉर्म 28 चाहिए. ओके, देन रिक्वेस्ट एग्जामिनेशन फॉर्म 18 चाहिए. And if you do early publication, we will discuss more on the examination publication in the next module. Here I'm just mentioning it here that for early publication form 9 chahiye, then there is a fees, and then for expedited there is a 18A that is only applicable, not for all, but there is some requirement who can file the expedited examination. Then if there is you need to file the authorization, then forms 26 is required. Okay, and the normally application is filed for the 30 pages and 10 claims. अगर आपने एक्स्ट्रा फाइल किया देन उसका अलग फीस है, पर पेजेस अलग फीस है. सो अगर हमने मान लो 35 पेज फाइल कर दिया, तो 30 पेज तक तो कोई नहीं है. ओके, सेम फीस है 1600. 5 पेज एक्स्ट्रा हो गया तो उसके लिए अगर नेचुरल है तो 160 रुपीज, और कॉर्पोरेट है तो 800 रुपये पर पेज. तो 800 इंटू 5 यानी 4000 रुपीज हमको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे. ठीक है, और क्लेम है, अगर 10 क्लेम है तो 1600 या 8000 हो जाएगा. अगर हमने ज़्यादा फाइल किया तो फिर हमको पर क्लेम एक्स्ट्रा फी पे करने पड़ते हैं. ओके, तो इंडिया में जो कुछ इनिशिएटिव्स हैं, I would request you to know those initiative as well. Okay, so in the next session I will try to do it, or I will give you as a homework. Identify what are the initiatives by Indian government, DPIIT or MSME to support invention in academic institutes or an MSMEs. तो उसमें जो है Devajit can tell, he has experience of those things. So there are some initiative. One is Kalam initiative. Okay, so उसमें क्या करते हैं कि
they give they say that your filing is free. तो कितना फी पे करते पता है? 1600 जो है फॉर्म 1 and 2 का, एंड देन रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन जो 4000 है, तो टोटल 5600 पर एप्लीकेशन वो पे करते हैं आपको, गवर्नमेंट पे करती है आपका, राइट देवजीत, है ना? यस सर. ओके, सो दे डू नॉट पे फॉर एनी एक्सपेरिएटेड, अगर फाइल करना चाहते हो या अर्ली पब्लिकेशन फाइल करना चाहते हो उसके लिए वो पे नहीं करते, 5600 पे करते हैं. So you should be aware of those initiatives as well, because that may be asked in an interview. वो एग्जाम में तो नहीं पूछेंगे क्योंकि that is not a part of it, but if you say that I belong to institutes or something like that, then they may ask you, okay, do you know about those kind of initiative where government is trying to increase the innovation in India. So they are also providing support for the case of like filing patent application, drafting and searching. सारा सपोर्ट देते हैं, दे पैसे भी देते हैं, आपको फाइल करना है और क्लेम बैक करना है. पहले पैसा नहीं देते, यू नीड टू क्लेम इट, देते हैं. सो यू शुड नो about those also. So I would request that you read about it. Okay, and then this is last slide for today. So mostly we go for filing the e-filing only. So ipindia.gov.in. So that is a web page you should try to visit regularly, and then you read about the WIPO system, read about the PCD system and TRIPS. इसके बारे में थोड़ा you read detail about it. And if you want me to discuss WIPO, PCD and TRIPS in our WhatsApp group, write it to me, then I can also take it up. Okay, so for today this much I have. Okay, so anything else you want to discuss or you want to share? So